बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर हमारे पास 4 है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर का। तो लेक्चर नंबर हमारे पास क्या है जी? लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास कंप्यूटर एज अ सिस्टम, कि कंप्यूटर बतौर सिस्टम किस तरह काम करता है। A computer is a complex system designed to process data and perform tasks according to the set of instructions. कंप्यूटर एक पेचीदा डिज़ाइन है जो डाटा को प्रोसेस करता है और टास्क को परफॉर्म करके यानी कि सेट ऑफ हदायत के मुताबिक यानी कि डाटा को प्रोसेस करता है। ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या होता है? The main objective of a computer is to perform computation, process data, and execute different tasks efficiently. For example, a personal computer's objective is to run software applications such as word processor, web browser, and games through various computational process. Next हमारे पास है जी components. A computer composed of many essential components that operate in conjunction. These components include internal phase components. Internal phase components refer to the fundamental part of computer system including input devices such as keyboard and mouse, while allow user to interact with the computer. Computer output devices such as monitor and printer are used to present and generate result from the computer operations. यानी कि कीबोर्ड और माउस के जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं और उसकी प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होती है उसको दिखाने के लिए हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर को यूज़ किया जाता है ताकि उसके जनरेटेड रिजल्ट को हम देख सकें। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। The processing components of a computer consist of the CPU, which act as a central processing unit responsible for computations and execute command, जिसका काम होता है कमांड को एग्जीक्यूट करना और कंप्यूट करके उसका रिजल्ट निकालना। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम इज अ ट्रांजिट storage that store data and instruction for a CPU, whereas storage यानी हार्ड ड्राइव इज अ परमानेंट स्टोरेज, यानी कि रैम हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज है और हार्ड जो है वो परमानेंट स्टोरेज है फॉर डाटा एंड सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। The operating system is responsible for receiving information from interface components and determining the appropriate actions to take, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना इंटरफेस से, फिर उसके अप्रोप्रिएट टास्क को परफॉर्म करना। जैसा कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या, विंडो। Application software refer to programs that are executed by the operating system when required to perform one or more specific tasks. Next हमारे पास है communication components. Communication components in the computer refer to the physical elements that provide communication between the different components of computer. In a computer, the motherboard servers services as a primary circuit boards that interconnections all components by using the cable and circuits. Next है हमारे पास a system bus is a collection of electrically conductive cable that transmit data between the CPU and all other interconnected components. There are three distinct types of buses: data bus,
address bus and control bus. These buses are used to transfer data between components such as instructions or commands from the CPU to other hardware components. नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो हमारे पास है इंटरेक्शंस अमंग कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किस तरह करते हैं so the components of the computer interaction with each other to perform tasks. For example, when you open a file using your mouse or keyboard, several components of your computer interact seamlessly to make this action happen. Here is a steps-by-step explanation of the process. Next है हमारे पास user action area inputs. You double click on a file icon using your mouse or press key combinations to open a file. For example, you double click on a document name यानी reports.docs on your desktop. फाइल अगर है तो वो क्या होगी ओपन हो जाएगी. Input devices. The mouse or keyboard send a signal to the computer indicating that you want to open the file. For example, the mouse sends sensory input to the computer operating system through the USB connections. Next हमारा टॉपिक है environments. The computer system environments includes any external devices that interact with the computer. For example, power supply provide electrically power to allow the computer to work. Network connect the computer to others system and internet is called network. यानी कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर या सिस्टम से जोड़ने का अमल क्या कहलाता है नेटवर्क कहलाता है. पावर सप्लाई क्या होती है इलेक्ट्रिकली जो करंट प्रोवाइड करती है उसको ऑन करने के लिए कंप्यूटर को वर्क करने के लिए उसको पावर सप्लाई कहते हैं. नेक्स्ट है पैराफेरल डिवाइस इंक्लूडिंग प्रिंटर स्कैनर एंड एक्सटर्नल disks that expand the computer capabilities. नेक्स्ट हमारे पास आज का इसका लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट कि किस तरह ये एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करता है. A computer interact with its environment to perform its functions. For examples, user input. A user types on the keyboard and the computer processes the input to display text on the screens. Network communications. The computer send and receive data over the internet to browse website or download files. Power supply. The computer rely on a stable power supply to function correctly. तो ये था हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे. तो इसलिए मैं लास्ट में फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्द अज जल्द कंप्लीट हो सके. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.